jewelry designing है क्या? So it's really simple. Jewelry designing is basically drawing nice pieces that everyone knows, but that's not where it ends. It's also about knowing that how we are basically gonna create those pieces which we have designed on paper and in the actual pieces. So technical एस्पेक्ट डिजाइनिंग में बहुत जरूरी है. वही एक चीज है जहाँ पे मोस्टली लोग हो जाते हैं, दैट दे डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट होना है. बहुत अच्छे पीसेस वो डिजाइन तो कर लेते हैं पेपर पे, बट जब उन डिजाइन को बनाने की बारी आती है, प्रोडक्शन की बारी आती है, देन दे आर लॉस्ट. सो in Jewelshala we are focusing on every aspects of designing. Like हम उन्हें पेपर पे, कोरल ड्रॉ पे, हर जगह डिजाइन करना सिखाते हैं थ्रू डिजाइन प्रोसेस, एंड देन उसको कैसे आगे लेके जाते हैं वो भी सिखाते हैं. So basically what a designer do, understand this thing. The designer is not just about creating a piece on paper. ठीक है, we create masterpieces, we manufacture those pieces, we provide solution to production houses. कि अगर कोई डिजाइन बनाया है तो हम उन्हें solution बताते हैं कि कैसे ये डिजाइन basically पेपर से as a product बनता है. We work with celebrities. These days we started having more of a freelance option जहाँ पे हम customer related products बनाते हैं कि कोई customer है वो हमें अपनी requirement बताता है and उसके accordingly हम वो particular piece डिजाइन करके उन्हें प्रोडक्शन में जाके मैन्युफैक्चर करके देते हैं. सो डिजाइनर जॉब डजंट एंड एट जस्ट मेकिंग नाइस पीसेस ऑन पेपर. इट्स ए होल प्रोसेस जिसमें डिजाइन पेपर से लेके प्रोडक्ट हाथ में आने तक यू नीड टू बी देयर. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट वी ऑलवेज आस्क आवरसेल्फ कि हम कब ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हैं, या कौन सा राइट टाइम है जब हम ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज रिमेंबर देयर इज नथिंग लाइक दैट. कोई राइट टाइम नहीं है. जब भी आप चाहें आप ज्वेलरी डिजाइन ज्वाइन कर सकते हैं. इवन इफ यू जस्ट पास 12th and you want to learn jewelry design, you can. You have graduated or you have bachelor degree in any field, you can. You are looking for a करियर चेंज कि आप अपने करियर से बहुत हो चुके हैं, आप बहुत क्रिएटिव करियर की तरफ जाना चाहते हैं, you can join jewelry design because jewelry design is one field जहाँ पे it's creative, it's technical and it's always new to learn every day. Next, because many times we are like, okay, हम jewelry designer बनना चाहते हैं, let's join a course. But then question comes कि do we have the skills to learn jewelry designing? क्या हम इतने creative हैं या हमारे में skills हैं कि हम jewelry designer बन पाए? Please remember, anyone can be a designer, but yeah, you need to have an aptitude to learning. You need to be creative. Now, when it comes to creativity, there is no limit. Now, when it comes to creativity, there are lots of scope for creativity. There is scope that you are really good on paper, you can start designing. You are not good with pen and paper, you can start designing on software. You are good with systems. If you are good with that, you have CAD, you have Corel Draw. There are lots of different software जहाँ से तुम jewelry design सीख सकते हो. Yeah, patience is the key. Patience होना डिजाइनिंग में या कुछ भी सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है. Why? क्योंकि without patience, how will you learn something? Dedication. Again, you are shifting to a new career. You are looking for a new career. You are learning a new thing, so you need to be dedicated. That's the key. Passion, practice. See, we are gonna give you really nice sessions during our classes, but after that, it's up to you that you have to practice. So, कुछ भी हो जाए after this, जब तक it's not just about jewelry designing. It's about anything new you are learning. So तुम्हें practice करनी पड़ेगी. It's like अगर आप कभी कोई नया स्पोर्ट्स भी सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सीख लिया. You need to be patient, you need to practice, and you need to have a dedication. Then observation. See, designing, because designing is all about getting inspired from different things.
and that's why observation is really important. आपको अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी डेली लाइफ में, डे टू डे रूटीन. इफ यू हैव योर ओन, जो घर पे आपके पास ज्वेलरी पड़ी है, यू नीड टू ऑब्जर्व देम कि कैसे बनी है, कैसे दिखती है, बिकॉज दीज आर डे टू डे थिंग्स व्हिच आर गोना गिव यू एन आइडिया दैट हाउ टू डिजाइन. एंड द लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंट. नाउ एक्सपेरिमेंट व्हाई? Because there are lots of designers these days. There are lots of people who want to create their own store, they want to create their own brand, and for that there is lots of competition. So you need to keep on experimenting with your designs, with your skills, so that you design something which is out of the box. Now the next thing is career option. So career option, you have lots of options. If you learn jewelry designing, you can start your own business and be an entrepreneur. And during the COVID period, there are lots of new brands which came in on Instagram, which are just the startup in jewelry. You can be a manual designer with some design house or with some manufacturing unit. You can start working as a in the manufacturing team. Because if you are not interested in designing, let's say manual designing, but you are really interested in technical part, कि किस तरह से पेपर से पीस कन्वर्ट किया जाता है, then you can go for manufacturing houses. Retail showroom, if you feel like you are really good with talking to people, you have a good knowledge of jewelry, you can start working in a retail showroom. Or boutiques, if you are like working woman or you are housewives and you don't have time for like 100% to किसी उसको देना चाहो, you can start with your own freelance activity. You can start making your portfolios on different websites and market yourself on Instagram, or there's lots of platforms these days. You have lots of scope to start your own freelance. You can become a CAD designer. Yeah, sure. For CAD designing, you have to learn CAD before being a CAD designer. These days, there is it's in demand, jewelry consultant. Now, what is jewelry consultant? Jewelry consultant are the people who basically help any brand to understand that how the market is going on, and you will work them. They will consult you regarding that what kind of pieces they should keep in their stores. Or if you are working as a jewelry consultant in an export house or manufacturing unit, then you will be there to help them how to design a piece. Basically, you can be an educator. Obviously, for educator, you need to have a good experience. You can become a production head or jewelry merchandiser. So you have lots of career options if you learn design jewelry. So what type of designs customer love? So see, this is a really tricky question, because every day you will meet a new customer. Every customer has its own demand, their own style. If you are dealing with a customer, let's say, who lives in Bangalore and working in an IT company, so they are more of a working woman, so their preference will be more of a contemporary design, okay, which they can wear in the office, lightweight jewelry kind. But if you are designing for someone like, let's say, some age group, which is like maybe my mother, so then the customer will be really different, because let's say they are housewives. They basically wear jewelry at home or in family functions, and then they will prefer more of a heavy jewelry and more of a, let's say, traditional design. So whenever you start dealing with a customer, you need to understand that what basically the customer like. You need to understand the customer, what is their daily routine. So all these things basically start giving you an idea that what kind of design they will prefer. I hope this give you an idea, right? Yes, thanks, ma'am. Okay, I understand. So Jasmeet, freelancers are the ones who basically work. They basically freelance. वो किसी particular job नहीं कर रहे, कहीं पे भी particular किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, वो किसी के साथ भी किसी भी टाइम एज अ फ्रीलांस, मतलब वो आपके साथ प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं. यू टोल्ड देम दैट नीड डिजाइन फॉर लेट्स से 10 डिजाइंस फॉर सम ब्राइडल कलेक्शन, so they will be designing 10 designs for you, and among those 10 designs
you are free to choose that you just like 5 designs. You will choose those 5 designs and pay them for those 5 designs. So that's basically what freelancers do. They are basically not working with any company. They are just designing on a project basis. Actually wanted to know if it is possible for us to directly go into designing by like knowing without knowing the basics and being a CAD designer, directly learning on learning CAD designing. See, it is possible. There is nothing like you can't become a, but the difference, see, understand how basically the industry works. Industry has 2 kinds of designer, like manual designer or corridor designers, and then those are the 2D designers. And then we have 3D designers, which are Rhino or CAD designers. Okay? So if you are directly learning the CAD designing, then the problem comes in one way that you don't know the basics. Okay, you know how to convert some. If someone is giving you a design, you can really nicely convert those pieces into 3D. But if you have to design your own piece, then you will be lost somewhere. So you won't understand that how basically those pieces can be made or how to design the basic pieces. So that's the only, and maybe with time when you start doing CAD designing on a daily basis, then maybe there is a scope that with time you will learn the basics also in the industry. I hope this answered your question. Yes, ma'am. Thank you. So one more question because it's there in the chat box. So please. see, in small area designer jewelry is not much preferred. I understand that, but same old pattern. See, it's not about they don't prefer new designs. It's just they want the same old technique. So you can use the same old techniques and start designing new patterns in that. Everyone wants a new. Remember one thing: everyone wants new design. Everyone wants design जो किसी के पास नहीं हो. They are the only one who have those kind of pieces. Okay, ma'am. Okay. ठीक है. So benefits of being a jewelry designer. What are the few benefits of a jewelry designer? First, it's a good paying job. How? We all have heard about fashion industry. There are so many sectors, be it textile, be it garments, be it when we talk about designing, there are so many others as well, be it communication designer, so many. But when we talk about jewelry designing, the pay is quite better than rest, as it is a developing industry. Okay, so if we talk about a freelancer or be it a full-time full-time designer as well, initially it might be a bit low, but gradually you when you gain experience, आपके आप मॉनेटरी टर्म्स में भी अच्छा ग्रो करते हो. ठीक है, स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यू स्टार्ट वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट इनफैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज में के साथ आप जब काम करते हो, अर्न इन डॉलर्स, राइट. सो द पे इज क्वाइट गुड, फेयर, एंड क्रिएटिव फील्ड है तो सी there is a difference between jewelry industry and jewelry as in creative industry and those in academics, right? So you have that freedom to express yourself, to express your creativity, and being in your comfort zone, enjoying whatever you are doing. You actually, that is a very big benefit. Otherwise most of the time ऐसा होता है कि लोग जो कर रहे हैं वो उसको पसंद ही नहीं करते, बस कर रहे हैं just to make money out of it, right? But you get the opportunity to actually convert it as a career and enjoy whatever you're doing. Prestigious job. So by this I actually mean is जब jewelry की बात होती है, especially Indian society में, jewelry is like luxury. नाम से ही luxury depict करते हैं लोग, right? So whether you are a jewelry designer or you are a jeweler, jewelry के नाम से एक luxury, एक prestige add हो जाती है, that is complimentary in this industry. So definitely a big market, as I mentioned, it is a growing industry. बहुत बड़ा market है. There are so many things coming up every time, every day, every year, so many things, right? कभी ये out of trend नहीं होने वाला. ऐसा नहीं है कि अभी चल रहा है 2 साल बाद jewelry नहीं चलेगी. Taste change हो सकता है लोगों का, लेकिन jewelry कभी out of trend नहीं होगी, right?
multiple source of income at a time, absolutely, as Surbi ma'am also mentioned and I also mentioned कि एक साथ आप बहुत सारे projects पे काम कर सकते हो, right? So you get a like कहीं आप dollars में earn कर रहे हो, कहीं आप अगर rupees में भी कर रहे हो, and you're working with so many different companies, you get a lot of exposure plus a growth in monetary terms as well. Work from home, especially for females, this is like उनके life scenarios इतने dynamic होते हैं. शादी हो गई तो एक ब्रेक आ गया, बेबी हो गया तो एक ब्रेक आ गया. There are several things you need to take care of along with your career, right? So this is a good opportunity for them and you can resume your career back again. Like जरूरी नहीं है कि आपको like 4-5 साल की डिग्री है and अभी आप काम कर सकते हो. You can kickstart your career anytime you want, right? You get access to national and international trade fairs. आई थिंक जिन लोगों ने विजिट किया है या करने का सोच रहे हैं, जैसे अभी लास्ट मंथ ही अगस्त में भी एक ट्रेड शो हुआ था जयपुर में. सो बहुत सारे फेयर्स होते रहते हैं हांगकांग में, डिफरेंट कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज में. यू गेट एक्सेस टू दोज. अगर आप स्पेशली किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो फुल टाइम तो उनको भी आपको यू नो एक्सेस देते हैं, एक्सपोजर देते हैं टू ऑल दीज ट्रेड फेयर्स which are really amazing. So it's a big opportunity and earn while learning. So this is an added advantage in this particular career जो कि शायद और किसी में हो ना हो, but ज्वेलरी में तो है, wherein आप कोर्स करते करते, पढ़ाई करते करते, like आपको अगर काम आपका अच्छा है and you are skilled, you have that knowledge and you are dedicatedly working, so people might recognize your skill, your creativity and might give you projects while you are learning as well. तो आपका खर्चा साथ साथ में निकल जाता है. तो I think ऐसे मौके हर किसी को चाहिए होते हैं ना कि पढ़ भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं. You all can do that, okay? You just need to keep updating your portfolios and you know look for opportunities and कनेक्ट करते रहो लोगों से, काम अच्छा करते रहो. They'll find you and then they'll give you opportunities. Okay, so the design process of jewelry designing. Design process of jewelry designing. ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है. आई थिंक कई लोगों ने सुना होगा जिन्होंने ऑलरेडी डिजाइनिंग की है. डिजाइनिंग के किसी भी बैकग्राउंड से अगर वो है, चाहे गारमेंट हो या टेक्सटाइल हो स्पेशली, तो इनसे तो पता ही होगा. ऑल्सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम सुनते हैं, लाइक रिसर्च है और मोटिव का नाम सुना होगा, है ना, लेबलिंग का नाम सुना होगा, कुछ कुछ चीजें सुनी होंगी, बट ये नहीं पता होगा कि डिजाइन प्रोसेस ही होता है. कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. तो आई विल बी हेल्पिंग यू कि एक्चुअली डिजाइन प्रोसेस होता क्या है एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग में इसका क्या रोल होता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन ब्रीफ, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्रीफ, जो लोग जूलर्स हैं यहाँ पे वो अच्छे से समझ पाएंगे कि क्लाइंट जब आता है उनके पास, वो अपने एक्सपेक्टेशंस बताता है कि उनको चाहिए क्या. हो सकता है एक क्लाइंट को एंगेजमेंट रिंग बनवानी हो, ठीक है, और उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया हो कि उनको मे बी व्हाइट गोल्ड में चाहिए, उनको कितने कैरेट का स्टोन चाहिए, उनको किस तरीके का मोटिव चाहिए, क्या पता कोई रेफरेंस इमेज भी लेकर आए हो. तो दैट इज द ब्रीफ, ठीक है, जो आपको क्लाइंट ने दिया. तो दैट फॉर अ डिजाइनर इज द डिजाइन ब्रीफ, ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग, अनदर स्टेप आफ्टर यू हैव रिसीव्ड अ ब्रीफ इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है. ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग में भूचाल मचा देता है. ओके, सो यू फ्लश योर माइंड अबाउट आइडियाज कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं एंड क्लाइंट ने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो आपने शायद पहले कभी देखी हो या आपको लगता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यू जस्ट राइट डाउन ऑल दोस पॉइंट्स एंड यू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन देम. तो इसी पॉइंट से कनेक्ट हो गया रिसर्च, व्हिच इज द थर्ड मोस्ट पॉइंट, ठीक है. यू लुक फॉर द ट्रेंड्स कि क्या चीजें अभी चल रही हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कि क्या चीजें ऐड कर सकते हैं. देन कम्स द फोर्थ पॉइंट. सारे पॉइंट्स जो हमने अभी तक देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डिजाइन ब्रीफ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्चिंग, इन सब को कंपाइल करते हुए, कनेक्ट करते हुए हम एक ऐसा इंस्पिरेशन ढूंढते हैं जो कि हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को भी सूट करे, हम उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी क्रिएट करके दे पाए, ठीक है. तो इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये हर जगह यूज होता है, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करो, चाहे आप केक मेकिंग या बेकिंग की बात करो, चाहे आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग की बात करो, देयर इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, ठीक है. आप कभी मैंगो से इंस्पिरेशन लेते हो, आप कभी मे बी पाइनएप्पल से इंस्पिरेशन लेते हो, आप किसी भी चीज से इंस्पायर हो सकते हो. यू कैन यूज देयर कलर्स, देयर टेक्सचर्स, देयर फील, यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है. तो इंस्पिरेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल फॉर
for like identifying or creating a direction for creating a out of the box jewelry, ठीक है, out of the box design, conceptualization, ठीक है. हमने इतनी सारी चीजें कर ली, रिसर्च भी कर लिया, अपने हिसाब से सोच भी लिया क्या क्या चीजें हो सकती है, इंस्पिरेशन भी हमको क्लिक की कि क्या पता हम एक नाइट लैम्प से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एक शैंडलियर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट हाउ टू क्रिएट अ डिजाइन आउट ऑफ इट, तो हमको उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है. वी क्रिएट सेवरल रफ स्केचेस या बहुत सारी चीजें, मे बी हम उस पर्टिकुलर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैंडलियर्स की हमने इमेजेस निकाली, हर किसी का कुछ कुछ पार्ट एलिमेंट लिया, एंड वी स्टार्ट रीडिजाइनिंग देम. वी ट्राई टू फिगर आउट कि हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी ऐड, जो है ऑलरेडी हम उसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हैं. बहुत सारे स्केचिंग करते हैं, उसमें से हर किसी में से कुछ कुछ बेस्ट निकालते हैं, देन वी फाइनली एक आइडिया हमको लगता है जो कि थोड़ा बेटर है, वी लाइक उसको हम साइड कर देते हैं, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द मोटिव. अब ज्वेलरी है तो मोटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. आप इयररिंग बना रहे हो, आप ब्रेसलेट बना रहे हो, आप नेकलेस बना रहे हो, आपको मोटिव तो चाहिए. तो दैट मोटिव शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज ज्वेलरी बिकती ही डिजाइन के नाम पे, मतलब लग्जरी ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो ले रहे हैं दे आर बाइंग इट, बट जिनको सुंदर भी चाहिए और उनको मतलब कम पैसों में और अच्छे उस पे उनको चाहिए, तो दे डेफिनेटली गो फॉर एस्थेटिक्स ना, लुक उनको चाहिए. तो यू हैव टू वर्क आउट ऑन सो मेनी डिजाइन्स, मोटिव्स, ताकि आप एक बेस्ट उसमें से सिलेक्ट कर सको. एंड मे बी आपने जो कंसेप्चुअलाइज किया है, जो आपने क्रिएटिविटी का सोचा है कि मे बी जो शैंडलियर होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मैं एक अलग तरीके से यूज करूँ और उनके साथ मैं इस पर्टिकुलर मोटिव को यूज करूँ. तो यू कंबाइन ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू हैव यूज्ड फॉर योर डिजाइन प्रोसेस, एंड देन हम एक डिजाइन के साथ फाइनल करते हैं. उसमें भी कई बार ऑल्टरेशंस होते हैं, आप जितनी बार बनाओगे हो सकता है क्लाइंट को कोई चीज ना पसंद आए या वो रिप्लेस कराए. देयर आर सो मेनी ऑल्टरेशंस दैट कीप्स गोइंग ऑन. मतलब दिस इज समथिंग जो हर स्टेप पे मतलब बैक एंड फोर्थ होता रहता है, ठीक है. देन कम्स लेबलिंग. अब लेबलिंग को अगर हम बहुत ही इजी वर्ड में समझे तो हमने स्कूल में सबने साइंस पढ़ा था, 10th तक तो पढ़ा ही था. टीचर बोलते थे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन करो, विंड पाइप क्या होता है, लंग्स क्या होता है, करते थे ना लेबलिंग, ट्रैश दे के लिखते थे भाई ये है. तो अगेन हेयर यहाँ पे भी हम ज्वेलरी के टर्म्स में भी डिफाइन कि भाई दिस इज द साइज ऑफ द स्टोन, दिस इज द काइंड ऑफ सेटिंग आई एम गोइंग टू यूज, दिस इज द कैरेट ऑफ द गोल्ड दैट विल बी यूजिंग फॉर द डिजाइन. इस तरीके का फिनिश हम क्रिएट करने वाले. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गोज ऑन फॉर लेबलिंग. रेंडरिंग. अब रेंडरिंग है तो मतलब लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो बहुत ही इजी चीज है, बट डिजाइन लैंग्वेज में हम इसको रेंडरिंग बोलते हैं. कलरिंग जब हम करते हैं हम उसी को रेंडरिंग बोलते हैं. हम उसको मैनुअली हाथ से पेंसिल कलर से करें. ब्रांडिंग also comes in labeling. No, labeling is different. ये मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है. This is about jewelry designing का process. ठीक है. I hope I have answered your question. Thank you. The final illustration. अब हमने डिजाइन रेडी भी कर ली, हमने उसको लेबल भी कर दिया, उसको रेंडर भी कर दिया. अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है इस तरीके से कि क्लाइंट को देख के समझ भी आ जाए सारी चीजें, वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में भी हो और आप उसको कैटलॉग में भी अपने ऐड कर सको. तो दैट इज कॉल्ड फाइनल इलस्ट्रेशन. ठीक है.